Good morning students, welcome to the class. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kethel. Students, we are on the chapter number 5, heat. We have studied about the conduction of heat, transfer of heat in solid by the process of conduction, and in liquid and gases it is the process of convection by which heat get transferred. So in convection, what happens? The molecules get heat up and they become lighter and moves in the upward direction. So the method of convection is important in our daily life. But how it get important? Convection causes warm water vapor to rise. When the water vapor rise up, they condensed into cloud, and when it cools and then fall back as rain. Without convection, there would be no rainfall and thus no plants. Similarly, the cause of wind is also due to the convection. Due to the convection current, when the air of a place get heat up, it rise up and the surrounding cool air rushes to take its place, that cause wind. So this is the importance of convection in our daily life. The first important, as we have see here, for the rainfall, and second one is for causing wind. Wind is also caused due to convection current. The other examples of the convection, magma in the mantle rises due to convection, because when it heat up, it become light and rises up. So the rises of magma is also due to the convection current. The heat from the core heats it and then it rises to form the volcano on the surface. This is also due to the convection. So the next method of transfer of heat is radiation. The two methods we have studied: conduction for solid, convection for liquid and gases. And now the next method is radiation. So what is this method, radiation? When there is no solid, liquid and gases in any part of our atmosphere. For example, we are discussing that the sun heat or sun rays comes to the earth's surface, but there is some part where there is no solid, liquid and gases at all, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम. एटमॉस्फेयर की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है. तो वहाँ से, वैक्यूम से भी आपकी सन रेज जो हैं वो अर्थ तक पड़ती हैं. तो जहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं होता, अब आपकी हीट ट्रांसफ़र सॉलिड में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा एंड गैसेस में हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. बट जहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ रेज की या फिर वैक्यूम की, जहाँ पे सिर्फ रेज ही ट्रेवल कर रही हैं, वहाँ पर जो मेथड हम बात करते हैं दैट इज़ रेडिएशन. रेडिएशन जो है, इस मेथड में द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेज, इंफ्रारेड रेज and the other rays, they transfer heat to the earth's surface, sun heat to the earth's surface. The transfer of energy or the heat due to the infrared rays or the electromagnetic rays is called radiation. Radiation can travel through space. For space, I have given you the example of sun rays. Sun rays travel to the earth by the method of radiation. ऑल थिंग्स रेडिएट हीट. इंफ्रारेड रेज जो हैं ये बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं रेडिएट करते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, ये वॉल्केनोज जो हैं इनके अंदर जो रेज होती हैं दे आर इंफ्रारेड रेज. वाई आर द लाइट बल्ब हॉट? दे आल्सो प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेज अलॉन्ग विद द विजिबल रेज. विजिबल रेज के साथ साथ वो इंफ्रारेड रेज भी प्रोड्यूस करते हैं. Infrared rays transfer energy to the molecule that make them vibrate faster.
इंफ्रारेड रेज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं एंड वाइब्रेशन से वो गर्म हो जाते हैं, दे बिकम हॉट. द सब्सटेंस दे प्रोड्यूस द इंफ्रारेड रेज. We have studied the thermal expansion. Thermal expansion, thermal means heat energy and expansion means to expand. When the object heat up, their particles move faster, hit other harder and bounce further, creating more empty space between the particles. जब वो हीट अप हो जाता है वो फास्ट मूव करने लग जाता है और एक दूसरे को बाउंस करके स्पेस क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक्सपेंड हो जाता है. एज अ रिजल्ट द एंटायर सब्सटेंस एक्सपेंड एंड दिस इज नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन. मैंने आपको रेलवे ट्रैक्स का एग्जाम्पल दिया था कि इनके बीच में गैप होता है फॉर थर्मल एक्सपेंशन, ताकि ये एक्सपेंड हो जाए अगर गर्मियों में, तो भी जो ट्रेन के जो टायर हैं वो बीच में से निकल पाएँ. वोल्केनो इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. वो गर्म होने के बाद एक्सपेंड हो जाता है, हीट अप होने के बाद एक्सपेंड हो जाता है और वो राइज हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन: रोड ट्रैक्स एज दे एक्सपेंड इन हीटिंग. On the bridge and the other sensitive section, expansion panel allow it to flex. So these are the example of thermal expansion. So what we have studied today: importance of convection. Due to the convection current, rainfall occur. The other example of convection current, I have told you the winds are caused due to convection current. Magma in the mantle rises due to convection. Heat from the core heats it and then rises to form volcano on the surface. तो यानी कि volcano is also due to the convection. Radiation. Radiation is the transfer of energy due to infrared rays and the other electromagnetic rays. Or in the vacuum where is no other medium, where is no solid and liquid and gases, there the radiation or the heat transfer by infrared rays. So radiation can travel through the space also. All things radiate heat, but when the radiation occur, some of the energy is absorbed and some of the energy is reflect. जब रेडिएशन होती है तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, जैसे सन रेज की जब हीट जो है वो अर्थ सरफेस पे आती है तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस चली जाती है. सन की कुछ एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं और कुछ जो है वो वापस चली जाती है. तो जो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जैसे हम ब्लैक कलर बोलते हैं, ब्लैक कलर इज़ द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. तो ब्लैक कलर जो है वो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, बट वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है. तो ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होती है, जैसे कि हम देखते हैं द कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन ब्लैक. यूटेंसिल्स जो हैं वो नीचे से ब्लैक होते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर लें हीट फ्लेम को. सिमिलरली इन समर डेज वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर देन द डार्क कलर. फायर ब्रिगेड्स मैन जो होते हैं उनकी शाइनिंग ब्रास कैप होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्टर है हीट की. जो हाउसेज हैं उनकी भी आप वॉल्स पे कलर करते हैं लाइट कलर ताकि वो समर्स में भी कूल रहें. तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ दिस रेडिएशन मैथड. Bulbs, they become hot because they produce infrared rays. Thermal expansion, the expansion of the object due to heat. When they heat up, they particles move faster and they bounce each other and create the space that cause their expansion. So continue with in the next video. Bye.